Jayati, let's go. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to yet another day of bloodshed but digital. Don't worry, the world is not in a good condition and we don't intend to add in any more pain. But yes, today we have a fresh map to start with, and that is Ascent. The last map of yesterday is today's first match. Bro, what's up? How are you liking the lineup? What are your views about the team members today? थैंक यू सो मच याति। सबसे पहले तो देखा जाए तो एसेंट का मैप डिफेंडर फ्रेंडली ज़्यादा है। तो देखा जाए तो डिफेंडर साइड में हमें देखने को मिल रहा है एक कंट्रोलर, एक सेंटिनल, एक इनिशिएटर और दो ड्यूलिस्ट। ये मेटा बहुत अच्छा मेटा है, इसके कारण उन्हें बहुत एक साइड होल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। और दूसरे साइड में भी सेम मेटा देखने को मिल रहा है, एक जगह एक इनिशिएटर, एक सेंटिनल, एक कंट्रोलर और दो ड्यूलिस्ट। तो देखते हैं कि बाय फेज में ये लोग कौन से वेपन्स बाय करके जाते हैं। फिलहाल तो सभी के पास क्लासिक दिख रही है, किसी के पास घोष नज़र आ रही है। और हमारा आज पहला मैप एसेंट। कल हमने 4 मैप बाइंड देखे, उसके बाद क्लोज लास्ट मैच हमने देखा था एसेंट, और आज का पहला मैच ही है एसेंट पे। क्या लगता है याति? It is going to be fun actually because see both the sides have one omen each, both the sides have one race each, both the sides has one sova each. Like both the sides are equally matched if you think about it. So it's now down to the scale, up to the credits, up to what gun they select because we know guns play a crucial role. And this being a defender friendly map, the attackers need to be a bit more aggressive, a bit more careful as well at the same time because they don't want to get that downside when it comes to the credit because the mental pressure will still be on. I think now they've taken a pause. Yes, I guess there is a tactical break already before the first match has started. Mac, I'm going to enjoy today. What are your views? They've already taken a break. सही कहा आपने। देखा जाए तो डिफेंडर की तरफ से हमें एक स्टैक देखने को मिला था, अभी तक शायद स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। किलजॉय का गेम प्ले देखने लायक रहने वाला है इसमें, क्योंकि जो टेरेट है पिस्टल राउंड में, टेरेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेरेट का जो डैमेज दिया जाता है उसी के कारण एक इनिशियल अप एज मिलता है डिफेंडर्स को अटैकर्स के ऊपर। तो देखना पड़ेगा कि टेरेट पोजिशनिंग कहाँ होती है डिफेंडर साइड से। अभी फिलहाल देखा जाए तो अटैकर्स भी ए की तरफ स्टैकिंग कर चुके हैं और डिफेंडर की तरफ से किलजॉय भी खेलते हुए। तो अटैकर्स का एक गेम प्ले माइंडसेट देखने लायक होगा कि क्या है। इसी के साथ आउटड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दिखने वाले हमें सोवा, और अपना बूमबोट यूज करते समय दिख रहे हैं रेस के साथ। साइड एंट्री की प्रोसेस स्टार्टेड और किलजॉय का स्वॉर्म ग्रेनेड बहुत अच्छी जगह, किलजॉय का वो स्वॉर्म ग्रेनेड था। आप देख सकते हैं कि सोवा की एचपी फुल डाउन कर दी उन्होंने, 20 एचपी पे छोड़ दिया है सोवा को। देखते कि नेक्स्ट No, this is already become very interesting. Soa is down to his last limit. The attackers have a fight. They are down to a 5v2, 5v1 situation. Yes, the attackers are going to back the first round until Omen decides to pull a complete clutch. He got a headshot. It's a 5, so it's a 3v1 situation right now. Omen holding his ground tough, figuring out a way to kill time and how can he see to it that the spike is taken care of. But it looks sleek. It's a 2v1 situation. Omen Race versus Omen. Omen is already pushing in for okay, this is cool. It's a 1v1 situation where it's Omen and he's already defusing. The other Omen is in front of him and the attackers won. Oh my god. It was a very close game. The defenders had a very good opportunity to come in. But towards the end, the man advantage did get the better out of the defenders. How did you like this round? एक बहुत अच्छा क्लच देखने को मिला हमें वहां पे डिफेंडर साइड के ओमेन की तरफ से, पर वो राउंड अपने टीम के लिए सिक्योर नहीं कर पाए। और उसी के साथ उतना ही स्टेडी गेम प्ले देखने को मिला हमारे अटैकर ओमेन की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा पेशेंस गेम और टाइम गेम खेले। उन्होंने वेट किया ओमेन की पोजीशन जानने के लिए। उन्होंने जैसे ही देखा कि स्पाइक पे अटैकिंग डिफेंडर के ओमेन आ चुके हैं और स्पाइक डिफ्यूज पे बैठ चुके हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करके फायर लिया। इसी के साथ बहुत अच्छा राउंड एक अटैकर किस तरफ जाता हुआ दिखा हमें, और इसी के साथ आउटड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखे सोवा, और साइड एंटर कर चुके हैं। डिफेंडर्स को पता लग चुका है, डिफेंडर का रोटेशन आता हुआ धीरे धीरे। जयाति, it's a small situation, it's a sticky situation. The spike has been planted, and we've got everyone alive and down to the very corner. Everyone's going to push in
to site A because yes, that's where the bloodbath is. That's where the people is. That's where the spike is. It's becoming interesting. We see an hour rage over here, but Jet not only takes down Killjoy, but she goes in for another kill and takes down the other Jet, and she actually blows up the entire team. So Bullseye is taking a lead over here of a 2 point and showing them key. Sorry, not Bullseye, the attacking team. Yes, they are taking a heavy lead over here, making it very interesting for the entire match to proceed. एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें वहाँ पे जेट के द्वारा, जिन्होंने स्पेक्टर के साथ एक एस ले लिया अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ किल बोर्ड में लीड पोजीशन पे जेट आ चुके हैं। जेट की तरफ से वहाँ का ए शॉट की तरफ का गेम प्ले बहुत ही शानदार था। उन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया अपने टीममेट्स के लिए और सीधा अटैकिंग पोजीशन लेके स्टार्ट कर दिया फायरिंग, और इसी के साथ एक बहुत अच्छा गेम देखने को राउंड देखने को मिला हमें अटैकर्स की तरफ से। देखते कि ये राउंड में क्या डिफेंडर अपनी टीम के लिए एक पॉइंट सिक्योर कर पाएंगे। I think defenders might be able to do something because this looks like a very evenly matched game. It's not that it's a one-sided thing. The people are very brutal. Everyone's got a badass player on this side. And as I'm saying this, the spike is initiated and the defenders lost one and the attackers lost one as well. The attack is starting, that too inside B. It's shooting crazy everywhere. People are trying to spot someone or the other. And as there is the boombot going in, we have to see will it do any sort of damage. Because we got Raze throwing in all she's got, all her abilities, and she's going batshit crazy. So this is going to be something. The spike is planted. We are down to a very minimum time limit over here. What do you think is going to happen up next match? जैसे कि बात कर रहे थे कि गन पावर की बात कर रहे थे, और देखिए ये राउंड में जैसे इसके पहला राउंड डिफेंडर्स ने इको किया था, इसी के साथ उन्हें एक क्रेट्स का एडवांटेज मिला, और उन्होंने ये राउंड में वो लोग एआज के साथ आए और ये राउंड सिक्योर कर लिया अपने लिए। तो हम जैसे बात कर रहे थे गन्स की, तो आपने देखा होगा अटैकर्स ने पिछला राउंड जरूर जीता था, और वो उसी एसएमजी बाय के साथ ये राउंड में गए, और अटैकर्स को वो एडवांटेज नहीं मिल पाया जो एक रन एंड गन का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशनिंग हमें देखने को मिली डिफेंडर साइड की ओर से। और हमेशा जैसे देखा जाए तो जेट खेल रहे थे बी लॉन्ग की तरफ से, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ देखने को मिला हमें डिफेंडर साइड की तरफ से। और धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए रेज ने पहले वो बूमबॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद थोड़ा डैमेज सोवा को दिया अपने पेंचल के साथ, और धीरे धीरे करके ये राउंड अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लिया। And now that this has happened, the defenders are coming in to take this round to set it as the equalizer. It's a 1-by-2 situation, a 5v5 situation. Killjoy heading towards the spot with the spike in her hand. Very carefully, Sova and Raze are making their move as the defenders from one end to the other, checking anywhere if anyone's trying to flank them and get them from the back, because enough backstabbing as of now. Good teamwork seen by both the teams. They're staying together, they're staying in a hurdle, and any moment a little bit of gunfighting is going to start, because yes, on the map we can see that they're getting close, really close together, and it has started. It's become a little brutal. We're back to a 4v3 situation. Omen, Jet and Killjoy on one side, with Omen, Sova, Raze and Killjoy on the other. So yes, the spike is planted. It is getting aggressive. We see Sova from the defense side, Axe Beast coming in as fast as he can, but oh no, it's not going to seem that easy for him, because he's got the dead and the defenders have actually eliminated every last one of them as they head to defuse the spike, getting the round in their pocket. Mac, how do you feel about this round? देखिए ये राउंड में हमें बहुत अच्छा एबिलिटीज का प्रदर्शन देखने को मिला हमें डिफेंडर साइड से। उन्होंने बिल्कुल घाई नहीं की, साइट लेने में रीटेक भी किया, तो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ओमेन का स्मोक करेक्ट टाइम पे वहां आया। उसके बाद सो अपने लाइनअप्स को प्रीफर कर रहे थे, लाइनअप्स पे रिलाई कर रहे थे, और इसी के साथ अपने लाइनअप से उन्होंने पहले थोड़ा डैमेज दिया, उसी के साथ किलजॉय डैमेज थे, अंडर हेवन थे, हेवन से 2 बंदे, एमेन से 2 बंदे, इसी के साथ बहुत अच्छा रीटेक देखने को मिला हमें डिफेंडर साइड से। और यहाँ पे दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेलते हुए, कोई भी टीम डोमिनेट नहीं कर रही है। एक राउंड अटैकर्स के फेवर में जा रहा है तो दूसरा डिफेंडर की सिचुएशन में जा रहा है, और यहाँ पे बहुत अच्छा आउटडाउन का इस्तेमाल इसी के साथ डाउन कर दिया है जेट को, और साइड मिल चुका है अटैकर्स को। इसके साथ
Attackers are coming back hungrier toward the defenders. They want this round back to themselves. They don't want an equalizer. They want that added point. As I'm saying this, the spike is being planted. And yes, the spike is planted. The attacking is started. The game has started. It's a close clutch. And we see Jet coming from, flanking from behind, backstab them. Actually shoot them at the back of their head like a boss with all the patience and all the nerves and no need to hide. Defenders caught off guard. It is an interesting phase, brother. Back to the like mind phase. Like, ooh, what's gonna happen? बुलजाई की तरफ से एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें यहाँ पे, और उनके जो 4 किल थे बहुत क्रूशियल साबित हुई एक राउंड उनकी टीम को जीतने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे किल के 4 किल उनके लिए। और पोजीशनिंग की बात कर रहे थे हम, बहुत अच्छा पोजीशनिंग किया बुलजाई ने अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ किल बोर्ड में वो लीड पोजीशन प्राप्त कर लिए उन्होंने। अभी नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि मिड की तरफ अटैकर्स अप्रोच कर रहे हैं। इस राउंड में वो बी पे प्लांट करना चाह रहे हैं स्पाइक, ऐसा लग रहा है। क्या जाती? But it is not going to look that easy because the defenders have taken in the corner and we see it is brutal already. The spike carrier is killed, but the spike was already taken up by Omen. They've caught their corners and they're trying to shoot, but no, it doesn't look that they will be able to do any good because it's a 3v1 situation. Spike planted, there's Sova. If Sova manages to gather out some intel out of somewhere, it might be that game changer. But for now, it looks like the attackers are going to take the team. Are going to get the team that added win, which they need to make a 2 margin. The same margin which they had from the beginning, and guess what? They got it. Matt, this is interesting over here. Exactly, जैसे आपने कहा दोनों टीम्स बहुत अच्छा गेम प्ले दिखा रही है यहाँ पे, और अटैकर्स ने 2 राउंड में लीड ले ली है 2 पॉइंट्स की। यहाँ पे बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है हमें। हालांकि जेट अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा किल ले रहे हैं वहां पे, और इसी के साथ हमें अटैकर्स की तरफ से थोड़ा डोमिनेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है बुलजाई की तरफ से। देखते हैं कि डिफेंडर्स मैच में बने रहने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे ये राउंड में। It is fun because over here we cannot say that the opponent team has an added advantage of a certain character because it's a well balanced team. Both the teams are equally the same, heading each other on the same map with the same abilities. But we can see over here each player has their own skill set, each player has put in the amount of hours to get the kills. We are seeing Killjoy unleash, which is blocking a good number of attackers in a particular spot, not letting them come out, but they are going to use that as an advantage and do something different. That makes it interesting. Killjoy coming in and she set out her art. The defenders have now set out the ultimate by Killjoy. See, this is a back-to-back situation. तो कुछ कर मैं भी कुछ कर। देखिए हम बात कर रहे थे सोवा की, और सोवा की तरफ से बहुत अच्छा अल्टीमेट देखने को मिला वहाँ पे। हंटर्स फ्यूरी का इस्तेमाल बहुत अच्छा, उसी के साथ उन्होंने बुलजाई को डाउन कर दिया था, जिसके कारण थोड़ा अटैकर्स को एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि उनका ड्यूलिस्ट जो सबसे ज़्यादा किल कर रहा था उन्हीं को सबसे पहले उन्होंने डाउन कर दिया। और बहुत अच्छा हमें एक रिटेक देखने को मिला है डिफेंस की ओर से। डिफेंडिंग में भी बहुत अच्छा एबिलिटीज़ का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है अभी सोवा की तरफ से। और इसी के साथ 3v4 की तरफ स्कोर लाइन बढ़ता हुआ, और बहुत अच्छे एबिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं सोवा यहाँ पे। हंटर्स फ्यूरी का बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिला हमें वहाँ पे मार्केट से, जिन्होंने ए साइड पे जेट को डाउन किया। It was very smooth towards the end. It was very something like they know what to do. Okay, we got Omen already throwing in a little bit of shadow bombing before he enters side B. They are taking out the turret, which makes it completely viable, and they've taken down Sova as well. Jet is showing why she is the MVP. She's killed 2 people in no time and she's making it look like a joke. Abhi pata chal raha hai why they were at the back of Jet. It's a 4v3 situation. Jet just died, but the spike was planted. Ooh, this is so smooth and good. The recon bot has given them a location. It's a 2v4 situation and the fight is escalating at point B. Back to you, Matt. देखा जाए तो जैसे हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला अभी फिलहाल जेट की तरफ से अटैकिंग में, और क्या रेज अपनी अल्टीमेट के साथ साइड रीटेक करने में सक्षम रहेंगे देखते। ओ, एक बहुत अच्छा जिगल पिक देखने को मिला हमें वहाँ पे किलजॉय की तरफ से। हम बात कर रहे थे जेट के गेम प्ले के बारे में। एज ए ड्यूलिस्ट जेट को ये गेम प्ले दिखाना बहुत जरूरी है अपनी टीम को, जब वो अटैकिंग कर रहे हैं। ड्यूलिस्ट का काम ही वो है
या आती कि वो अपनी टीम के लिए एक लीड बना के दे, जिसके कारण डिफेंडिंग में उन्हें वो लीड का फायदा हो। जैसे हम देख रहे हैं जेट की तरफ से बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें। वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सोचने को टाइम नहीं दे रहे। डिफेंस में जैसे ही डैशिंग करते हैं, एक बी लॉन्ग पे उन्होंने बंदा खा लिया, उसके बाद सीधा डैशिंग करके बोट हाउस में किलजॉय को डाउन किया। धीरे 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 करके वो अपनी टीम को एक मैन एडवांटेज सिचुएशन में डाल देते हैं, जिसके कारण एक मोरल बूस्ट मिलता है उनकी टीम को। हम हर राउंड में यही देख रहे हैं। हाँ वो डेफिनेटली है, बट हियर वी सी everyone's already at point B. The smoke of Omen is almost covering as much as we can see. Every corner there is a smoke by Omen. There is a bloodshed, and wow! In the blink of an eye, the attackers took out entirety of the defense team. And guess what? Made it look like child's play. The attackers are getting the moment. They are getting the flow. I think they've understood the strategy of the defense team, which is going to make it difficult because the attackers are again managing to get that little bit of added advantage in the lead, which is going to add mental pressure. Mac, back to you as we start round 10. देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, पर एग्जीक्यूशन में थोड़ा गलत हो गया वहां पे डिफेंडर साइड से। देखते हैं ये राउंड में क्या हो पाता है। ऑपरेटर के साथ दिख रहे जेट हमें यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव जाते हुए अपने ड्यूलिस्ट के सेकंड ड्यूलिस्ट के साथ जो है रेज, और इसी के साथ पहला बहुत अच्छा किल वहां पे पीके As से। we see Riz going for a boom bot kill, and does she make a difference? No, but they get an idea where the other opponent is, which gives them a little bit of intel, giving them an opportunity and a window to strategize. In the other end, we see a 3v2 situation, which makes it interesting. And the board situation has changed. Attackers are now down to a 1 with Sova, while the defenders are doing nothing but killing. This time, the defenders have played a very commendable game, setting up to our entry in round 11. Bro, the buyout phase is so good over here. We see the credits also well balanced among both the teams. Ooh, this time the attackers. I see someone with a pistol. Are they actually going to enter with a pistol? Okay, no, that's not going to happen. Among the defenders, we see there is one carrier of an operator, and that is Jet. So let's see what's going to happen. Will Jet be able to get to this map, because there are a few vantage points which she can exploit and get a good. Not gonna happen. The drone is already in. The fight is started. Back to you, Mac. एक बहुत अच्छा गेम प्ले। अब जैसे हम बात कर रहे थे जेट की तरफ से एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें, और एक बार और इसी के साथ साइट मिल चुका है अटैकर्स को, और स्पाइक प्लांटेड स्टार्ट हो चुका है। 3v5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। इसी के साथ थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में है अटैकर्स, और क्या हो पाएगा। हमने पिछले राउंड में भी देखा कि डिफेंस में उन्होंने जैसे एग्रेसिव की अपनी टीम के लिए एक राउंड सिक्योर कर लिया। यहाँ पे डिफेंस को थोड़ा एग्रेसिव खेलने की जरूरत है। जॉय ने स्पॉट कर लिया यहाँ पे दो बंदों को, और इसी के साथ बैक टू बैक किल्स बहुत अच्छे साइड रीटेक के लिए 2v2 पर स्वॉर्म ग्रेनेड पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे सोवा अपने लाइनअप पे खेलते हुए दिखाई देंगे हमें। We are seeing another face-off between the opponent Killjoy and the Sova over here. Sova has done damage. No, Killjoy has taken down the entire platoon down with her. Not only has she defended the spike plant, but she's managed to kill every last one very patiently. Now we are heading to the last round before the swap. Ladies and gentlemen, we've seen the attackers do a commendable job. We've seen the defenders do a commendable job. But the attackers have an advantage, and the defenders, well, they have a 3-point deficit, which is not going to damage them that much. It's not that low of a moral boost, but yes, up next defenders, y'all are going to be attackers, and this map was said to be more favorable for the defenders. And as we proceed, we can see people heading in for point B straight. Two of the defenders stuck at point A, and that is the one thing which will make a difference, because when the attackers come in, they have this teamwork and harmony, and they are in for the kill. But attackers just lost a race, and it's a 4v5 situation. Mac, take over. एक बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिला हमें वहां पे किलजॉय की तरफ से मार्केट में, जिसके कारण थोड़ा पीछे हटना पड़ा जेट को। नहीं तो हमने अभी तक देखा है जेट सोलो पुश कर रहे हैं हर राउंड में, हर साइड पे बिना कुछ डरे, और धीरे धीरे अपनी डिफेंस वालों को पता चल चुका है सोवा का। वहां पे बहुत अच्छा रिकॉन आता हुआ। इसी के साथ क्या वो स्पॉट करेंगे वहां पे दो प्लेयर्स को, और इसी के साथ बहुत अच्छा वॉल बैंग देखने को मिला हमें किलजॉय की तरफ से, और एक शॉक डार्ट बहुत सही समय पे आता हुआ सोवा की तरफ से। Beautifully placed shot dart.
क्या यहाँ पे डिफेंडर्स ये राउंड अपनी टीम के लिए सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद देखने को मिलने वाला है हमें स्वैप, जिसके कारण जो गेम प्ले अभी हमें डिफेंस में देखने को मिला है वही अटैक में देख पाएंगे। अरे बाप रे, बहुत अच्छा गेम प्ले वहां पे देखने को मिला हमें ओमेन की तरफ से, जिन्होंने वहां पे किलजॉय को डाउन कर दिया, और इसी के साथ डिफेंडर ये राउंड अपने साथ ले जाएंगे। बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें यहाँ पे। एक डिफेंस में किलजॉय का जो सेटअप था, जिसके कारण एक थोड़ा स्टॉप लगा दिया था वहां पे जेट को, और जिसके कारण थोड़ा टाइम बाय कर लिया, उसके कारण उसी के कारण अपनी टीम के लिए राउंड ले जाने में सक्षम रहे डिफेंडर्स। This has been rather too intense. A 5 point and a 2 point, and we are back to a swap with everyone having a pistol. The next round is going to start in the next 20 seconds, and this is going to be fun because sabka role change ho gaya hai. So let's see what the attackers can do now with a 2 point deficit while the defenders have the 2 point advantage. So will the defenders be able to maintain it? Because how do I say, as per this map, there are certain sites which gives them access to run right from the center to A and B, which makes it a little easier for defenders to maneuver around the map. But let's see what's going to happen now. The pistol started, the smoke started, and Omen doing what he does best. He's already blocked two sides, which is difficult for people to see. And as they come out of the smoke, it's an intense fight, and Killjoy from the attacking team gets 2 kills, and we are down to a 3v2 situation. Omen with the spike is going in. Will they actually be going in for setting up a spike, or will they just go for an all-out brutal kill for every player who's there, just for the thrill of it? Cheap thrills, why not? Helps. It's a 2v4 situation, and my oh my, it is beautifully brutal. Over here, the spike is planted, and it's a 3v2 situation. They're trying to set the door down, but no. The attackers have pulled down the door at the right moment, causing the defenders to move around. It's a 1v3 situation now, and Mac, you tell me, will the defenders do anything or poof? बहुत अच्छा रिकॉन वहां पे, जिसके कारण पोजीशन रिवील हो चुकी है, और 5 एचपी के साथ ये क्लच करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होने वाला है रेस को। और उनके पास उनकी एबिलिटीज में ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, उनके पास जस्ट एक सैचल है, उसके कारण मुझे लगता है कि वो अपनी एबिलिटीज को बैक नहीं कर पाएंगे, और ये राउंड अटैकर्स के साइड जाने वाला है। और देखिए वही हुआ, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बहुत अच्छा वहां पे रिकॉन था, जिसके कारण पोजीशन रिवील हो गई, उसके कारण वेट करना पड़ा, जिसके कारण टाइम बाय कर लिया अपनी टीम के थोड़ी अटैकर्स द्वारा। और हम हर बार देख रहे हैं जेट को पुश करते समय, हम अटैक में देख रहे थे जेट बहुत अच्छा पुश कर रहे थे, पर डिफेंस में हर बार पुश करने से राउंड नहीं मिलता है ब्रो। No, you need to be patient. You need to figure out a way, get your corner and stick to that corner. Now it's 6-7. Now the attackers and the defenders have a very, very thin margin, which is going to make it so interesting for us. Let's see what's going to happen. Will the margin be subsidized in total? Or will we get a little bit more of competition, a little bit of ताना जाही, आगे पीछे, तू मैं क्या होगा? I have no clue, man. But as it's getting interested, we see the attackers are being patient while the defenders are rushing in. I don't know why they're doing it the other way around. Defenders slowly are gathering around B while a set of attackers are near the corridor of A, looking for an opportunity to push. But no, the defenders are getting frantic and searching for everyone as quick as they can, and attackers patiently, one step at a time, going in. There is going to be a confrontation between Rays and the attackers, and as this is said, it starts. The shooting is started, the bombarding is started, the defenders have already lost one of their own, and that is Omen. And as I said that, not only did they lose Jet after that, but the opposite team also lost. Now the defenders are down to 1 with Killjoy to a very low HP against a fight of 4 people. The spike is planted and there is no opportunity for Killjoy to set in, and with this Killjoy is taken down, and we are up to the 15th round with an equalizer score of 7-7. Mac, this game is interesting. हाँ, जैसा कि आपने बोला एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग तो बन रहा है। हमें इको देखने को मिला था, और डिफेंडर साइड से हमें एक 20 स्टैक देखने को मिला था, जिसके कारण तो हम अटैकर्स ने थोड़ा वेट किया, और उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा अर्ली रोटेशन देखने को मिला जरूर, पर वो रोटेशन के बाद वो राउंड कामयाबी से अपनी टीम के लिए नहीं जीत पाए डिफेंडर्स, क्योंकि शॉर्टी के साथ हमने 3 बंदों को देखा एक गार्डन्स खेलते हुए, पर उसी के साथ बहुत अच्छा स्पेक्टर से गेम प्ले देखने को मिला रेस द्वारा, जिसके कारण वो अपनी टीम के लिए एक राउंड सिक्योर करने में कामयाब हो गए। देखते हैं कि ये राउंड में क्या गेम प्ले रहता है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ खेलना प्रीफर करेंगे, क्योंकि किलजॉय ने बेस टैग करके रखा है,
और इसी के साथ टैरेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल, टैरेट की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी के साथ टैरेट को डाउन कर दिया, और किलजॉय को भी बहुत अच्छा गेम प्ले वहां पे रेस के द्वारा देखने को मिल रहा है हमें। ओमेन We का see वो the attackers take over so slowly after, even though a lot of damage being dealt to every last one of the members. They successfully managed to strike plant the spike, and they're sitting over here waiting for another Bhirna sort of an equation or a situation to happen. But it's a 4v4 situation right now. Every last member is down to a very low HP. It's become crazy. Bullseye is already defusing the bomb, and they are down to a very close battle. What's gonna happen? Will Killjoy be able to dissipate the bomb before and defuse it? No, okay, yes, the diffuser was killed. Oh my god, it's too brutal right now. We've got a 1v2 situation and the defenders won. My god, it was so confusing. For a moment I was like, yes, no, yes, no, yes, no. I was constipated in the head. बहुत अच्छा गेम देखने को मिला हमें यहाँ पे डिफेंडर के साइड से। बिल्कुल कहीं नहीं कि अपनी एबिलिटीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल, जिसके कारण वहाँ पे जो सोवा का रिकॉन था डाउन दी हेवन, वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण उन्होंने रेस को डाउन करने में सक्षम रहे, सिक्योर कर लिया अपनी टीम के लिए एक राउंड, और बहुत अच्छा एबिलिटीज का इस्तेमाल। हमें किलजॉय की तरफ से A1 की तरफ गेम प्ले देखने को मिला, पर मैन एडवांटेज सिचुएशन था डिफेंडर के साइड, डिफेंडर के फेवरिंग, और वहाँ पे जेट ने स्मोक करके अपने टीममेट्स को स्पाइक पे बिठा दिया और वेट किया। देखते हैं ये राउंड में क्या हो पाता है, क्या डिफेंडर की तरफ से हमें एक हाथ पुश देखने को मिलता है, या वेट करके पहले रीड करना चाहेंगे वो कि अटैकर्स क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। देखते हैं। But as we know, the defenders, they've never been patient. They've always pushed. Over here, we can again see the defenders take over A, while the attackers, the ones who should be pushing, are patiently waiting to figure out where is the defender doing what to the defender. Now we see a fight start and take over at A. It's brewing very carefully, patiently. A 4v4 situation turned into a 3v4 situation right now. Killjoy is figuring out, and she's taken a little bit of a tiff with Jet, but she decides to back off and stay, while we have Raze from the defense side trying to flank and get an angle to get a little bit of a kill. But now a turret is being set up by Killjoy, but the turret was of no use as Sova comes from the corner, takes down Killjoy and Omen at the same time. We got Sova from the defense team who's being really brutal. Now we got one member from the attack team left, and that is Sova. And guess what? The defenders win, getting back their lead. जैसा कि हमें सोवा का तरफ से एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, वहाँ पे सोवा ने अच्छा होल्ड किया था सिटी के तरफ, और जैसे ही सोवा ने टेरेट का साउंड सुना डिप्लॉयमेंट का, उसी के साथ उन्होंने एक पिक करके किल निकाला वहाँ पे किलजॉय का, साथ ही साथ ओमेन का, और फिर एक राउंड के लिए फॉर्मेलिटी बच चुकी थी, एक सिंगल प्लेयर होल्डिंग सोवा अपनी टीम के तरफ से विदाउट हैविंग अ स्पाइक बी पे ड्रॉप हो चुका था, और फिर वैसे ही मिड मार्केट से रेज ने डाउन कर दिया सोवा को। इसी के साथ बहुत अच्छा राउंड खत्म हुए दिखा हमें। डिफेंडर के साइड से अटैकर्स को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ये मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि डिफेंडर बहुत अच्छी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं। And over here we see both the attack and the defense have two members each who have that ultimate ready. But, well, that's not how it's going to be like. They need a little bit. We got Jet coming in with her ultimate and getting the kills for the attack member, and no, she was taken down by Sova. Up next, we're going to see what's going to happen, because it's a 1v2 situation with Sova versus Sova and Jet. And this is going to be interesting. The defenders won. The defenders won. The defending Sova killed the attacking Sova, getting a 3-point lead over the attackers, making it a little bit stressful for them. And if the attackers don't have a comeback right now, the chances of them winning will become slim, because the stress is going to add on. And we don't know what's going to happen. Will they be able to maintain the stress, or will they just break under stress and give all the remaining rounds to the opposing team? Attackers, come on. You'll have got 3 people with ultimates ready. Defender has just got 1 Sova. But yeah, that's brutal enough. Back to you, Mac. बहुत अच्छा बॉम्बॉट का इस्तेमाल देखने को मिला वहाँ पे, और इसी के साथ एक बहुत अच्छा किल जेट की तरफ से आता हुआ। डिफेंडर जेट ने बहुत अच्छा ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वहाँ पे अटैकिंग जेट को डाउन किया, और उनके पास इन्फो है अभी फिलहाल, और अच्छा वेट करेंगे, वो वेट करके किल निकालने का ट्राई करेंगे अपनी टीम के लिए। और बहुत अच्छा वहाँ पे हेड शॉट ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिल रहा है। हमारे जेट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अपने ऑपरेटर को बैक करते हुए वहाँ पे
अपनी टीम को मैन एडवांटेज सिचुएशन में डाल दिया है, जिसके कारण 3v5 का सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमें अटैकर साइड से। Over here we see Killjoy set up another turret in a very cheeky and sneaky place, but a 5v3 situation with the attackers being a little in a tough spot doesn't seem that favorable to them. Sova figuring out more recon, getting into a 2v4 situation makes it slimmer. Sova and Killjoy decide that they need to team up, unite, get planet power to get the fight. It's a 2v3 situation right now, and we see people are eyeing each other and are ready to bring in the fight. Sova has spotted the other team members. So what's gonna happen? Is Killjoy gonna figure out how to plan the spike? And as I'm saying this, she does. She starts the initiation process, but as she gets done with it, she gets taken down by Omen, and Omen has already started the diffusing process. The chances for them to win look slim, and the defenders take this round in their pocket. Attackers are dealing with a lot of stress. I can imagine what the five-man team over there must be thinking and wondering, pressure is increasing. क्या हो रहा है? क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ? Back to you, bro. देखिए हमने जैसे देखा कि जैसे जैसे डिफेंडर्स एक के बाद एक राउंड अपनी टीम के लिए जीतते जा रहे हैं, वैसे ही ग्रेड का फर्क पड़ता जा रहा है अटैकर साइड से। इसी के कारण हमें ये राउंड के पहले वाला राउंड हमें एक इको देखने को मिला था, जिसमें स्पेक्टर्स बाय करते हुए दिखे थे अटैकर्स, और पिछला राउंड जरूर उनके लिए बाय आया था, पर देखना पड़ेगा कि इसके बाद का राउंड उन्हें फिर से इको पे जाने को मजबूर कर देगा। इसीलिए ये राउंड के द्वारा देखा जाए तो ये राउंड जीतना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अटैकर्स को अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है जेड अपनी टीम के लिए। जेड फुल डोमिनेशन दिखाते हुए ऑपरेटर के साथ वहाँ पे एक बहुत अच्छा किल सोवा की तरफ से आता हुआ, पर वहाँ पे बुलजाई ने डाउन कर दिया है सोवा को। अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जस्ट एक छोटा पीक लिया था, और ऑपरेटर का बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिल रहा है हमें जेट के द्वारा। और इसी के साथ 3 अल्टीमेट के साथ डिफेंडर रेडी है अटैकर्स को टेक डाउन करने के लिए। 2 अल्टीमेट जरूर देखने को मिल रहे हैं हमें अटैकर्स की तरफ, पर अभी तक कोई ऐसा गेम प्ले देखने को नहीं मिला है जिसके कारण अटैकर्स ये मैच में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें। Attackers are definitely struggling right now to figure out a way. And as I say that, they are slowly, gradually sneaking into point B so that they can come and spike. They don't know that point B, where there is one person waiting for them, and that too, it is Sova. So that's going to be a brutal scenario for them the moment they enter. And I think there is some technical issues. I'm so apologetic about this. We are coming back online in a few seconds. Yes, ladies and oh my god, what happened? Ah! Standing ahead. Match point. I don't know what happened, but yeah, it's the match point right now, and the defenders are guaranteed in the lead with a good 5-point lead, no mental stress whatsoever, and the will to make a difference and get to the next round. They want to win. The defenders have 2 ultimates ready, while the attackers have 3. The attackers look desperate. They might bring out all the big guns as of now because they don't even have the opportunity to lose one match. The stress is huge. The stress is humongous. And as we enter what could possibly be the final round of the match, we see Jet come in with the operator and take a few shots. She's heading in and she's going back. She's gotten a kill and she's using her abilities to zoom back to safety, even though it's a brutal fight. It's a 4v4 scenario and Jet is with her operator, but no, in close range combats the operator doesn't help. A 3v4 scenario with all the 3 members of the attacking side having their ultimates ready, while 2 members of the defending side have their ultimates ready, are keeping their eye on site A, which is going to make it a little complicated because they are spread across the map as well. Being as cheeky as they possibly can, they are running their way from point A to point B right now because yes, a little situational change can actually give them the added advantage, but no, the attackers want it back. 4v1 situation and we see they've not planted yet. Are they actually going to go for a plan or actually going to just kill the defenders and get this point to their team? Doesn't look that easy, doesn't look that simple. It's going to look very brutal, but yes, as the match is proceeding, a 4v1 situation. Will Sova from the defending side be able to get a clutch switch situation? Because that doesn't seem that light. The attackers have 3 ultimates waiting and the planting is done. Sova is down to the final few seconds and we can see intense battle happening. Sova has taken one member down, getting it to a 3v1 situation, but that itself doesn't make it very light for him. He needs to not only take down all the 3 members, he needs to get there and defuse the bomb, which is now at site A. He's taken down another person, getting a
2v1 situation, and we see Rez with a lot of less health, which could make a lot of difference for him. And the advantage, if he gets the kill and he takes that Omen with maximum health, he can actually get the game in his pocket. But we see everyone is sneaky, everyone's waiting for that one chance, and no, Sova couldn't do it. Towards the end, Rez only got a bomb in and blew Sova back to Kingdom Come. And taking the match point, we are going to the next round. Attackers are pushing hard. Attackers want to get a difference. And Mac, do we have you back with us? हाँ, एकदम सही बात बोले आप कि अटैकर्स को ये राउंड जीतना बहुत जरूरी था, नहीं तो उनके झोली में एक हार का सामना करना पड़ा रहता उन्हें। और इसी के साथ एक बहुत अच्छा राउंड जाता हुआ अटैकर्स की तरफ, पर वहां पे सोवा की तरफ से हमें बहुत अच्छा फाइट बैक देखने को मिला। सोवा ने अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश की वहां पे राउंड जीतने के लिए, जिसके कारण वो मैच जीत सकते थे। और मैच पॉइंट के साथ देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे डिफेंडर्स। देखते हैं क्या इस बार भी ऑपरेटर के साथ कुछ कमाल कर पाते हैं कि नहीं। जेट वहां पे मिड में बहुत अच्छा स्मोक आता हुआ ओमेन की तरफ से। ओमेन जानते थे कि हर बार एक जेट की तरफ से ऑपरेटर का यूज होते हुए दिख रहा था, इसके कारण उन्हें पीछे धकेलने में स्मोक का इस्तेमाल बहुत अच्छा साबित हुआ वहां पे अपनी टीम के लिए। और धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा साइड के तरफ एंट्री, और इसी के साथ ओमेन का बहुत अच्छा किल आता हुआ वहां पे। उन्होंने जैसे ही स्पॉट किया कि रेज अपने शो स्टॉपर के साथ आते हुए, उन्होंने सीधा उन्हें डाउन करके बी साइड की तरफ एंट्री ले ली है। और अटैकर्स अपनी ये टीम में ये मैच में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और इसी के साथ किल जॉय अपनी टीम के लिए क्या ये राउंड सिक्योर और मैच सिक्योर कर पाएंगे? नहीं, किल एनिमी किल जॉय ने डिफेंडर किल जॉय को डाउन कर दिया। और एक राउंड अटैकर की तरफ से बहुत अच्छा राउंड आता हुआ। इसी के साथ हमें कम क्रेड्स के साथ इस बार ऑपरेटर देखने को नहीं मिलेंगे डिफेंडर साइड से। डिफेंडर्स को क्रेड्स की कमी महसूस हो सकती है आने वाले राउंड्स में। और बहुत अच्छा राउंड देखने को मिला है हमें अटैकर की साइड से। देखिए अभी हमें डिफेंस में शेरिफ और एक ई को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये और एक राउंड लीड बना सकते हैं अटैकर्स अपनी टीम के लिए। देखते हैं कि ये आगे क्या होता है। बहुत अच्छा मैच जा रहा है ये। It is really, really intense. And as we are heading to another match, which could be the match point, but the attackers are going on a leg over here and they need that win. They want to make it into the top finals. They are desperate for it. They know what this title stands for. And over here, as we enter the first round of as we are coming to one of the closing rounds for the second day of this tournament, we are seeing a lot of intensity, a 4v5 situation, a lot of bullets, a lot of credits, and a lot of shooting. When will the action start? Are they heading to point B? No, 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 no. They are heading to point B. And the attacking has started in point A. Signature ability has been charged by the defenders, and they're pushing in. It's a 3v3 situation. Both the team have a res and an omen. But the difference is one has a Sova with them while the other has a Killjoy. The spike is planted, and as the spike was planted, the defenders are down to the last leg, and the attackers making a severe comeback. It seems like the attackers are going to make a difference and going to get the 10 points, reducing the margin between the defenders and them, but still it's too early to say. As Sova is taking out a revolver, and she's taken out for a perfect headshot with Killjoy. Now it's a 2v1 situation. The spike is planted and it's a very, very close situation. Sova going in with all he has. He's going from above. He's seen the turret and everything which is already there. But what is going to happen? Okay, Killjoy taken down. No, it is Killjoy who is taking down Sova, with attackers adding another point and reducing the deficit by 2. It's a 10-point to 12-point match. This match is interesting. What say, Mac? एक बहुत अच्छा राउंड देखने को मिला हमें डिफेंडर के साइड से भी और अटैकर के साइड से भी। देखिए जेट के द्वारा वो जो पुश था, जो सोवा अपने आउल ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे वहां पे, एक बहुत अच्छा पुश। उसके बाद शेरिफ के साथ हेडशॉट से किल एआर लेने में सक्षम हो गए थे वहां पे अपनी टीम के लिए। पर जैसे ही वापस आते थे अटैकर्स की तरफ से बहुत अच्छा पुश आते हुए वहां पे शॉट की तरफ से, और बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला वहां पे। बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं अटैकर्स की डिफेंडर्स आखिर करना क्या चाह रहे हैं। इसी के साथ वुमेन के स्मोक से रीड करके वेट करा रहे हैं जेट को, जिसके कारण हर बार जेट का जो पुश आ रहा था इस बार उन्हें वेट करना पड़ रहा है एनिमीज के लिए। और धीरे धीरे अटैकर्स का काफिला एक ही तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। इस बार वो ए टारगेट करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, और डिफेंडर्स ने रीड कर ली उनकी स्ट्रैटेजी और धीरे धीरे रोटेशन आता हुआ नजर आ रहा है हमें बी की तरफ से ए की तरफ। और अटैकर्स ब्लफ करना चाह रहे थे, डिफेंडर्स मूव हो रहे बी की तरफ।
देखिए कितना जल्दी-जल्दी रोटेशन आ रहे हैं और गेम प्ले बदल रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है अपनी एबिलिटीज़ के कारण। जैसे-जैसे ओमेन के स्मोक, सोआ के रिकॉन्स आ रहे हैं, वो हिसाब से रोटेशन बढ़ता हुआ डिफेंडर्स का ए की तरफ और अटैकर्स ने बहुत अच्छे से एक रोटेशन दिया है, पर जेट की पोजीशनिंग देखने वाली रहेंगी क्योंकि जेट की पोजीशनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे अटैकर्स। बहुत ही एग्रो पोजीशन और इसी के साथ लॉकडाउन देखने को मिला हमें वहां पे किलजॉय की तरफ से और एक बहुत अच्छा डैश और किल देखने को मिला हमें बुलसाई की तरफ से, पर वहां पे रेस के सैचल उनके कामयाब कर देंगे ये किल सिक्योर करने में। और बहुत अच्छा राउंड देखने को मिल रहा है हमें अटैकर साइड से। पर पर क्या ये लॉकडाउन का इस्तेमाल करके डिफेंडर ये मैच अपनी टीम के लिए जीतेंगे या नहीं, देखने को मिलेगा जल्दी। क्या याती? No, no, no. I don't think that's happening because they didn't beat the lockdown. Before the lockdown even set in, they got the kills, they got it, and they got the match point, which makes the defenders the winners for today. And my oh my, were they brutal! गाइस एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला हमें यहाँ पे और इसी के साथ डिफेंडर्स ने ये मैच जीत लिया है और बहुत अच्छा गेम प्ले वहाँ पे जेट की तरफ से 30 किल्स और 14 डेथ के साथ फुल डोमिनेशन देखने को मिला है यहाँ पे डिफेंडर्स के जेट की तरफ से। बहुत अच्छा ऑपरेटर का इस्तेमाल देखने को मिला वहाँ पे हमें और एक बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अर्ली रोटेशन दिया था डिफेंस ने, पर इसी के साथ ये मैच जीत लिया है। और गाइस ऐसे ही हमारे साथ बने रहे आने वाले टाइम में और आपको एक से बेहतरीन मैच देखने को मिलने वाले हैं। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड गाइस। Hello, हेलो डेमी। bro.
Welcome back, ladies and gentlemen. And yes, we are back to another round of Valorant. And the next map up with us is Haven. Whew. Thank God, I like the freshness of the maps. So, yes, before we continue, I would like to give a shout out to our associate partners, Juggernauts, who have started a fan club for ISL inside of Orissa FC. Now they have shifted as a sports management company and they're here to support our esports tournament. Other than them, we have Explore Hatke, one of the finest travel companies from Eastern India who find the exact offbeat destination to go and explore something new. Along with me, Yayati Parekh, we have Mac, who's going to take over from now and discuss what's going to be what. थैंक यू सो मच आयाती। देखो, ये हेवन का मैप बोला जाए तो एक ऑपरेटर का बहुत अच्छा यूज देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे। जेट के द्वारा दोनों टीम में जेट एक ड्यूलिस करके हमें देखने को मिल रहा है, उसी के साथ उन्हीं के साथ निभाने के लिए रैना और एक ब्रीच का यूज देखने को मिल रहा है डिफेंडिंग साइड से एज ए इनिशिएटर और अटैकिंग में सोआ। उसी के साथ सेंटिनल में एक तरफ है सेज, एक तरफ है साइफर और ओमेन कॉमन है। तो देखते हैं कि कौन सी टीम अपनी अपोनेंट टीम को यहाँ पे शोडाउन करने वाली है। शुरुआत करते हैं पिस्टल राउंड से। पिस्टल राउंड में डिफेंड करते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं लाइम जूस के प्लेयर्स। लाइम जूस डिफेंड कर रहे हैं और पर्पस स्पोर्ट अटैकिंग में दिखने वाले हैं। और हेवन का मैप बहुत बड़ा है और 3 साइट है यहाँ पे। सो बहुत मजे आने वाले हैं देखने के लिए। और यहाँ पे रोटेशन बहुत जल्दी होते हैं और देखते हैं कौन सी टीम पर भारी पड़ती है। It is going to be interesting because, yes, on one hand, we have two duelists with the attackers and the same two duelists with the defenders. We have Omen. But the difference is this time we have a new map. We have 3 spots over here. It's going to be interesting. And this has always been considered to one of the most OG maps in Valorant, which is going to make this really interesting a game for all of us to see. This is the map we've seen Shroud do some of his magic. So as the game begins, we see everyone is scattered all across the map. The defenders, other than 2 members of the defenders, they are actually sparsely separated from each other. Let's see what's going to happen as the match starts. We're into the first minute of the match, and boom, we have got in an attack. Back to you, Mac. पर्पज स्पोर्ट्स की तरफ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। वो कौन सी भी साइड पे कमिट नहीं कर रहे, पुश नहीं कर रहे। धीरे धीरे उन्होंने पहले इन्फो के लिए ट्राई किया, देखा कि अटैकर्स डिफेंडर्स उन्हें पुश करते हैं कि नहीं। उसी के साथ इन्फो के लिए पहले खेलना चाह रहे हैं, इन्फो उन्हें मिल नहीं रही है, जिसके कारण थोड़ा सा वेट टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अटैकर। ब्रिज का वहां पे बहुत अच्छा स्टन आता हुआ, ट्रेमर आता हुआ और इसी के साथ थोड़ा सा जेट को वॉक करना पड़ा। और यहाँ पे साइफर और जेट एंट्री करते हुए सी पे नजर आ रहे हैं हमें। और वहां पे साइफर का बहुत अच्छा किल, लाइम जूस के ब्रिज को डाउन कर दिया और इसी के साथ साइड सी के तरफ। और ये हमें देखने को मिल रहा है एक रोटेशन, जिसके कारण ए पे एस की साइड ले लिए और स्पाइक प्लांट होता हुआ नजर आने वाला है हमें ए पे। सोआ के रिकॉन और शॉकडार्ट का इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ आउल ड्रोन अटैकिंग में और बहुत अच्छा पुश। और इसी के साथ लाइम जूस की तरफ से बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है यहाँ पे और 1v3 सिनेरियो क्रिएट कर दिया लाइम जूस के प्लेयर्स ने अपनी टीम के लिए। और बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है लाइम जूस के प्लेयर्स के पास यहाँ पे स्पाइक डिफ्यूज करते समय। और साइफर ए शॉट से आते हुए पर सी से ए तक का सफर बहुत टाइम कंज्यूम है, जिसके कारण डिफेंडर्स का ये अप्रोच और डिफेंडर्स का रिटेक सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी के साथ एक पॉइंट सिक्योर कर लिया डिफेंडर्स ने। बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला यहाँ पे डिफेंडर्स की साइड से। उन्होंने रोटेशन जल्दी नहीं दिया, तो थोड़ा वेट किया। पर्पस स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने भी इन्फो के लिए ट्राई किया, पर डिफेंडर्स ने ये राउंड में अपनी जीत कामयाब हो गई जीत के लिए। Lime Juice played a very well balanced team job. Now we are back to our round 2. We got Omen who carries the spike. But yes, this time the attackers seem to have only pistol and the defenders also don't intend to max out on their weapons. So it's again going to be a skill battle, ability battle, and ability to notice which player is going to be at what position, because this is a huge map. As we enter this round, we are seeing very carefully Jet is keeping an eye over there, and we know that right around the corner there might be death, there might be bullets, and yes, a bullet has been shot by the defending team.
It's gonna be tough because that gives away the location of the defender, and because of that, Jet has been struck by one of Omen's attacks, rendering her a little blinded and attacked, where she loses a team member of hers, making it a 5v3 situation. What's gonna happen up next, Mac? देखिए बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें डिफेंस पे। लाइम जूस की तरफ से वो बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रही है अटैकर्स के लिए, और अटैकर्स की गलती पर रिएक्ट करके वो किल हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये अपनी तरफ से कोई ओवर पिकिंग नहीं देखने को मिल रही है वहाँ पे डिफेंडर्स के साइड से, और डिफेंडर्स यहाँ पे स्पेक्टर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और जेट विद दैट शरीफ मूविंग टुवर्ड द 30 सी। seconds left. उन्हें पता नहीं है शायद कि सी पे ऑलरेडी ब्रिज खेल रहे हैं। ब्रिज का ट्रेमर बहुत सही समय पे आता हुआ, और इसी के साथ बहुत अच्छा किल जेट की तरफ से शरीफ से वो वहाँ पे। और इसी के साथ जेट के पास गन आ चुकी है, पर यहाँ पे मैन एडवांटेज सिचुएशन में, और एक बहुत अच्छा किल आता हुआ जेट की तरफ से। टाइम बहुत कम है वहाँ पे, और स्पाइक बी पे ड्रॉप कर दिया है। क्या यहाँ पे बी पे स्पाइक प्लांट होता हुआ नजर आएगा हमें, देखते हैं ये राउंड में। और बहुत अच्छा किल आता हुआ रैना की तरफ से, लाइम जूस की तरफ से, और यहाँ पे स्पाइक तो प्लांट हो गया, पर जैसे ही स्पाइक प्लांट होते ही वो पोजीशनिंग के लिए मुड़े रैना पीछे से ए लिंक की तरफ से लाइम जूस की रैना ने वहां पे किल कर दिया पर्पस स्पोर्ट्स की रैना को। और एक बहुत अच्छा राउंड आता हुआ डिफेंडर्स की ओर से। डिफेंडर्स कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, अच्छे से रीड कर रहे हैं गेम को। अटैकर्स की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से रीड करके ये और एक राउंड अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लिया। This is beautiful. Lime Juice is showing beautiful teamwork. The attackers, I don't know what's up, but the attackers are kind of taking it slow. It doesn't seem as though they're pushing it and trying real hard as of now. The guns which we see, we got Breach with a sniper in his arsenal, which is going to make it a little interesting because it'll give him that added edge of a distance view to deploy his attacks. What's going to happen? Everyone is here back to point A and the shooting is started. Okay, we've already lost two members from Team Lime Juice this time, that being Sage and Rana with a 3v5 situation. Omen is very patient, patiently carrying and planted the spike. Now Jet is already ready with an ultimate from the attacker's side, and she's closing in and inching in one step at a time with her gun, and there, as I say that, she takes down Sage from the opposing team. Player standing. Back to you, Mark. देखिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोच देखने को मिला अटैकर साइड से। इसके पहले के दो जो राउंड हुए उनमें वहाँ पे वो स्प्लिट खेलते हुए नजर आए थे, पर उन्होंने अच्छा स्ट्रेटेजाइज किया ये राउंड में, और एक साथ पुश डाला ए साइड पे, और एक मिड शॉट बाय होने की वजह से डिफेंडर्स को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में डाल दिया अटैकर्स ने पिछला राउंड एक सेमी इको राउंड किया, और ये राउंड में उनके पास एआरस आ गए, और डिफेंडर्स अपने पिछले ही राउंड के वेपन्स के साथ ये राउंड में आए थे। और एक बहुत अच्छा राउंड जाता हुआ अटैकर साइड में। अटैकर्स को एक अच्छा मॉरल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 2-1 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं है, क्योंकि कोई टीम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीड नहीं है, कोई टीम यहाँ पे लीड नहीं कर पा रही है बहुत ज़्यादा पॉइंट डिफरेंस से। दोनों टीम्स एक साथ खेलती हुई नजर आ रही है, बहुत अच्छा गेम प्ले दोनों की तरफ। अगर अटैकर्स ये राउंड भी अगर हारती तो उनके पास एक बहुत बुरा क्रेड्स का कलेक्शन होता, जिसके कारण उन्हें वेपन्स बाय करने को नहीं मिले होते। इसी के साथ एक हेल्दी राउंड देखने को मिला हमें अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगेन सेम स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करते हुए वहाँ पे अटैकर्स सबने वहाँ पे साथ मिलकर अपने एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके साइट हासिल कर लिया है, और धीरे धीरे रोटेशन आता हुआ नजर आ रहा है हमें डिफेंडर साइड की ओर से। बहुत अच्छा स्मोक आता हुआ नजर आया, और जेट को वहाँ पे इन स्मोक्स डाउन कर दिया साइफर के केज में। साइफर के केज की यही खासियत है कि साइफर के केज में अगर एनिमी एंटर करता है तो वहाँ पे एक अलग साउंड इफेक्ट आता है, जिसके कारण रिकॉग्नाइज करने में बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ बहुत अच्छा राउंड और एक बहुत अच्छा राउंड देखने को मिल रहा है हमें अटैकर्स की एंड से, और यहाँ पे न्यूरल स्टेप देखने को मिला हमें साइफर की ओर से। साइफर ने पोजीशन देख लिए, और इसी के साथ बहुत अच्छा हेडशॉट देखने को मिला साइफर की ओर से, ब्रिज को डाउन कर दिया। और एक बहुत अच्छा राउंड जाता हुआ अटैकर की साइड से। अटैकर्स ने पहले दो राउंड में स्प्लिट खेलने का ट्राई किया, पर यूनिटी इज स्ट्रेंथ उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया, और 2 पॉइंट्स कमा लिए अपनी टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर लाइन 2v2। The movement of the attackers, very smart. I don't know why I have a feeling, looking at their gameplay, if you notice the last 2 rounds which the attackers have won, they barely lost players and characters from their side. Over here, the attackers, I have a feeling, are testing the opponent, seeing where the defenders stand, which makes it more interesting because the attackers are
on an equalizer right now. Are the attackers going to make that difference and see to that the defenders stand no more chance? Because yes, the brutality is big and the attackers are taking down defenders one at a time, getting into a 5v2 and even planting at the same time. The drone's up by Soval, the spike is planted, intel is coming everyone's way. This makes it too intense, too heated, and too interesting. What can they do in a 1v4 situation? Will Sage be reviving someone or no? He is basically going to be victim to another shot by Jet. Beautiful round up to round 6, and yes, we are into the buying stage. Mac, what do you think? I have a feeling that this match is going to be way too brutal because Jet from the defense side has already picked up an operator now. पर्पज स्पोर्ट्स की तरफ से हमें एक बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिला। सही समय पे वहाँ पे रिकॉन आता हुआ, सही समय पे जेट डैशिंग कर रही है और उसी के साथ बहुत अच्छा इंटेल मिलता हुआ पर्पज स्पोर्ट्स को, जिसके कारण वो अभी धीरे धीरे हमें पॉइंट टेबल में ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है पर्पज स्पोर्ट्स की तरफ से, वो बिल्कुल चांस नहीं दे रहे। और यहाँ पे एक कोलैटरल किल की तरफ जाते हुए जेट ने ऑपरेटर के साथ अपनी टीम को स्लाइट एज एडवांटेज दे दिया है। जैसे एटॉमिक ने अपनी टीम के लिए 2 किल निकाले, थोड़ा सा स्लाइटली पर्पज ई स्पोर्ट्स को वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगेन वो गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें, जैसे पहले 2 राउंड में देखने को मिला था स्प्लिट गेम प्ले। और पर्पज स्पोर्ट्स ने पिछले 2 राउंड में यूनिटी के साथ खेलकर 2 राउंड 3 राउंड जरूर जीते, पर क्या ये राउंड अपनी टीम के लिए वो सिक्योर कर पाएंगे? बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला वहां पे एटॉमिक के तरफ से लाइम जूस के लिए। देखते हैं क्या, बहुत अच्छा वेट जरूर कर रहे हैं वो, और रैना को स्पॉट कर लिया मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे। देखते हैं क्या वो यहाँ पे और एक किल ले पाएंगे। It is a 2v situation now if you look at it, the attacker, even though they lost 2 members, One enemy remaining. on a one-man advantage. We got this side B up above because of our advantage to jump and get those highs and lows. But guess what happened? It is too late. What just happened? That was too quick. देखिए बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें अटैकर्स की ओर से। उन्होंने बिल्कुल कमिट नहीं किया कोई भी साइड को, वक्त लिया अपना, और एक बहुत अच्छा राउंड अगेन एक बहुत अच्छा राउंड जाता हुआ अटैकर्स की एंड से। और अभी ऑपरेटर जा चुके अटैकिंग में, अब रैना ओपिंग करते हुए दिखने वाले हैं अटैकिंग में। देखते हैं कि कैसा इस्तेमाल करते हैं वो अटैकिंग में ऑपरेटर का, क्योंकि हालांकि हमने बहुत बार देखा कि डिफेंस में ऑपरेटर यूज होते हैं, अटैकिंग में बहुत ज्यादा प्लेयर प्रीफर नहीं करते हैं ऑपरेटर। I have a feeling the attack is going to go and figure out a way to clear out every last member. Because we see Jet from defense already take out her ultimate, pick a corner, wait for her bait to come in so that she can kill them without even having to hesitate, and that is so too crazy to look at. Both the teams have all their 4-4 ultimates on each side except for Cypher and Breach, which doesn't seem to be much of a worry for either of them. The attacking ones and the damaging ultimates are already in place. What's going to happen next? The shooting is started and the attacking side has already lost Cypher, and as they proceed, the team from the defense lost Breach, and it's going to be very aggressive as we see Reyna from the attacking side zoom in with her, open with her operator, but that doesn't seem that light for them. It's a 3v2 situation with the spike falling somewhere. The spike is not there, but the defense is down to 1 player, and that 1 player is on ultimate. And yes, we see what Omen does best, using his abilities to get a little bit of fear into the minds of the opponent. For replanting the bomb, and before he even completed the planting, the defense was taken down by Reyna's headshot. And yes, Reyna was beautiful over here. Back to you, Mark. एक बहुत अच्छा और एक राउंड जाता हुआ पर्पज स्पोर्ट्स की साइड से, बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। हालांकि इस बार मैन एडवांटेज सिचुएशन में डाल दिया था लाइम जूस को उनके ड्यूलिस्ट ने, पर वहां पे बहुत अच्छा कमबैक देखने को मिला। पर्पज स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिसके कारण उन्हें हर राउंड में अपनी टीम के लिए पॉइंट सिक्योर करने में आसानी हो रही है। वो चीज़ हमें लाइम जूस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से सिर्फ जेट और एक इनिशिएटर का गेम प्ले अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत अच्छे से पर्पज स्पोर्ट्स की जेट ने वहां पे लाइम जूस के इनिशिएटर को डाउन कर दिया। बहुत अच्छा गेम प्ले, बहुत ही एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें जेट की तरफ से वहां पे। और साइफर बखूबी अपना रोल अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और एक राउंड पर्पज स्पोर्ट्स के साइड से जाता हुआ नजर आ रहा है हमें। They are planting the
They're planting this spike, and yes, Purpose Esports is gonna get another win in their bag. I think it was just the first two rounds that they gave the obligation to Lime Juice that yeah, you can win. Let us understand your game strategy and skill set. But after that, Purpose Esports has been so too brutal. Attackers do not intend to leave the defender. Now in Sage is yet the last one standing, running for her life and being killed brutally. A 4v0 situation, a 2.6 point with a 4-point lead towards the attackers, making it too interesting a match. Oh my god, Heaven. कि हम बात कर रहे थे ऑपरेटर की और हर राउंड में भी हमें ऑपरेटर देखने को मिल रहा है। हेवन ऐसा मैप है जहाँ पे ऑपरेटर का यूज ज्यादा करते हुए नजर आते हैं प्लेयर्स, और ये एक बहुत अच्छा अटैक और एक अच्छा अटैक देखने को मिला हमें पर्पस स्पोर्ट्स की तरफ से। पर एक्चुअली हो या ये रहा है कि पर्पस स्पोर्ट्स फुल्ली अटैक कर रहे हैं विदाउट गिविंग टाइम फॉर डिफेंस टू यूज देयर एबिलिटी, जिसके कारण हर बार एक स्लाइट एडवांटेज में डाल दे रहे हैं अपनी टीम को। और ब्रीच का वो गेम प्ले देखने लायक रहेगा, क्योंकि ब्रीच की तरफ से हमें वो फ्लैशेस, वो ट्रेमर और रोलिंग और थंडर क्या देखने का वेट कर रहे हैं। अभी तो रोलिंग और थंडर उनके पास आ चुका है, देखते हैं कितने जल्दी वो अपने अल्टीमेट का यूज करके अपनी टीम के लिए राउंड सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। It is going to be something. And as the planting has started, we are on a 4v3 situation. It's interesting as the defenders have all their abilities, but nobody is using it. It's a 2v4 situation, and it doesn't look polite on the defender's side. Breach coming out with his ultimate, but unfortunately not succeeding in doing any damage whatsoever, later resulting in the death of Sage as well. And yet another point to PE, to the attackers. Mac. It's become टाइम जूस के one-sided now. तरफ से वो सिनर्जी देखने को नहीं मिल रही है हमें जो पर्पस स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। पर्पस स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और सिनर्जी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वो पॉइंट टेबल में भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर लाइन हो चुका है 2-7 का, 2 ऑन द लाइम जूस साइड एंड 7 ऑन द पर्पस स्पोर्ट्स साइड। बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है। देखिए दोनों प्लेयर्स पर्पस स्पोर्ट्स की तरफ से, एक है साइफर और जेट, दोनों की लीडर पोजीशन में सबसे आगे है। बहुत अच्छा गेम प्ले एज अ सेंटिनल और ड्यूलिस्ट, एक है लर्कर एक है ड्यूलिस्ट, दोनों की तरफ से बहुत अच्छा अपना रोल प्ले देखने को मिल रहा है, जिसी के कारण पॉइंट टेबल में लीड मिल चुकी है उन्हें। यहाँ पे देखते हैं कि कितने और पॉइंट्स अपनी टीम के लिए जीत पाते हैं लाइम जूस यहाँ पे। One of the deadliest things in a match can be a sentinel who knows how to control all the powers. Over here, it is brutally good about the fact that Cypher has the power and the crosshair ability and the ability to get the kills when it matters. Because yes, that is going to change the. So the location is revealed of the players as of now. It's not going to be that difficult because it's a 5v3 situation, a 5v2 situation, and a 5v1 situation to the last player on the defense side being Jet. What is Jet gonna do right now? She doesn't have her ultimate ready, she's got all her strength, but she has no purpose, no possibility of making any defense, and yet another bagging to their back pockets of a victory by the attackers. It's become too one-sided. And yes, the defenders need to figure out a way. Lime Juice, y'all are being juiced out over here. Y'all need to focus and get your head back in the game. Why are y'all so distracted? The first two games were so well played. Come on. देखिए ये स्कोर लाइन के कारण हो क्या रहा है, लाइम जूस की तरफ वहाँ पे वो क्रेड्स नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण उन्हें हमेशा एक इको या फिर सेमी बाई करना पड़ रहा है। और सेक्टर्स और हमें इको का गेम पिस्टल्स का गेम प्ले देखने को मिल रहा है, जिसके कारण स्लाइट ओवर एज मिल रहा है पर्पस स्पोर्ट्स को। हर राउंड में देखने को ये सेम चीज़ देखने को, देखिए सेम चीज़ हुई इस बार भी। शेरिफ के साथ रहना को देखना पड़ा हमें वहाँ पे हिलोंग पे, और इसी के साथ सोलो पुश जेट का बहुत अच्छा पुश था, जिसके कारण वो वहाँ पे जेट को डाउन करेंगे। पर साइफर की तरफ से बहुत अच्छा ट्रेड आता हुआ वहाँ पे। देखते हैं कि 3v4 सिचुएशन में इस बार लाइम जूस अपनी टीम के लिए पॉइंट सिक्योर कर पाएंगे या अगेन एक और इको में देखना पड़ेगा हमें लाइम जूस की तरफ से। It doesn't look very likely because Lime Juice is not using the ultimate ability of Sage and reviving anyone yet. We are done 10 rounds and she's not even revived one person. Either they need to figure out what are the exact abilities and how to use it, or pick better characters because it's damaging the team. A 2v4 situation, Omen and Sage versus Rena, Omen and
So, but as I say that each team loses one player and now the defenders lose all the player, giving the attackers that margin of win Last which the round before the defenders switch. need to put everything to get in. The attackers win this, they're going into defense, and yes, we know the attackers are good with their operators. It's going to be a nightmare for the defending team as of now to figure out a way to change the game. They need to take a break, they need to come up with all the ideas, but Mac, my friend, do you have any strategy for them? देखिए ये राउंड में हमें 3 ऑपरेटर का यूज़ इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहा है। 2 ऑपरेटर अटैकिंग साइड और 1 ऑपरेटर डिफेंडिंग साइड। देखते हैं कि क्या ये राउंड में डिफेंस के साइड ये राउंड जाता है कि नहीं, क्योंकि पहले हमने जैसे देखा था और एक बहुत अच्छा किल देखने को मिला हमें वहाँ पे ब्रिज के द्वारा। इसके पहले भी कोलैटरल किल में 2 किल लेने में कामयाब हो चुके थे लाइम जूस के जेट, और ऐसा ही कुछ गेम प्ले का अपेक्षा है उनकी ओर से, क्योंकि ऐसा ही अगर गेम चलता रहा तो जस्ट 3 राउंड दूर है पर्पज स्पोर्ट अपनी जीत से। कुछ करने की ज़रूरत है लाइम जूस को अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ बहुत अच्छा पुश वहाँ पे कराची की ओर से आता हुआ ओमेन का उन्होंने डाउन कर दिया ब्रीच को, जो अपने ऑपरेटर से कमाल दिखा रहे थे अपनी टीम के लिए। और अगेन 2v4 सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, और स्पाइक, और यहाँ पे बहुत अच्छा किल जरूर मिला है एटॉमिक की तरफ से देखने को मिला, पर एटॉमिक की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और वहाँ पे एटॉमिक का और एक किल 2v2 सिनेरियो। क्या ये पॉइंट देने में सक्षम रहेंगे लाइम जूस के प्लेयर्स? और देखिए बहुत अच्छा गेम पे देखने को मिल रहा है, जैसे उन्होंने किल किया अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जिसके कारण उन्हें पता था कि उनका ट्रेड लेने के लिए कोई ना कोई एनिमी टीम से ज़रूर आएंगे। और एक बहुत अच्छा स्पाइक प्लांट हो चुका है सी साइड पर, और दोनों ड्यूलिस्ट डिफेंस के धीरे धीरे मूव ऑन रिटेक के लिए कर रहे हैं सी साइड की ओर से। और एक बहुत अच्छा लर्क देखने को मिल रहा है सोवा की तरफ से। सोवा की जो पोजीशनिंग है, अगर सोवा की पोजीशनिंग फाइंड आउट नहीं करते डिफेंस की ओर से, तो ये राउंड हमें पर्पल स्पोर्ट्स की साइड से नजर दिखेगा। पर बहुत अच्छा किल वहाँ पे जेट की ओर से, जेट अपनी स्कोप का इस्तेमाल करते हुए नजर और आखिर में ओमेन की पोजीशनिंग, जिसके कारण ये राउंड जीतने में सक्षम है पर्पज स्पोर्ट्स की तरफ से। हम हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें लाइन जूस की तरफ से देखने को नहीं मिल रही, जिसी के कारण ये स्कोर लाइन हो चुका है 2-10 का। देखिए किल बोर्ड की तरफ देखने को मिल रहा है 16 किल्स लेवी की तरफ से, पर्पज स्पोर्ट्स के लेवी 16 किल्स 7 डेथ के साथ सबसे आगे, और उन्हीं के नीचे सेंटिनल। सेंटिनल के तौर पे देखा जाए तो एज अ साइफर प्लेयर उन्हें बहुत थोड़ा पीछे खेलना पड़ता है अपनी टीम के लिए, और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी किल निकाले उन्होंने अभी तक। वो उनकी टीम की ड्यूलिस्ट जो रैना है उनके उनसे भी 1 किल ज़्यादा आगे है। हालांकि रैना ओपनिंग कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा एंगल देखने पड़ते हैं। पर बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है यहाँ पे साइफर की तरफ से। देखते हैं कि डिफेंस में क्या कर पाते हैं पर्पज स्पोर्ट अपनी टीम के लिए। It looks very intimidating right now for Lime Juice, because over here we see as they come in, they've gotten the first kill, but it's a pistol round, so maybe they can get and fetch a few points over here with the brutality. But that doesn't seem likely because it's already a 3v2 situation, and I can hear gunshot after gunshot throughout the map, and it is crazy brutal. A 2v2 of 2v1 situation, and the defenders take it. Yes, Purpose Esports is maintaining the ground. They need 2 more matches in their pockets to get this round and proceed to the next rounds of this tournament. A beautiful game indeed. एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला वहाँ पे किल अपने रैना की तरफ से। गराज में कोलैटरल किल्स बहुत अच्छा, घोस्ट की तरफ से बहुत अच्छा कोलैटरल किल दिया, जिसके कारण थोड़ा सा पीछे डाल दिया था, और जेट का पुश ब्रिज की तरफ से, जिसके कारण वो ब्रिज का किल लेने में सक्षम रहे। और इसी के साथ और एक राउंड, बहुत अच्छा राउंड पर्पज स्पोर्ट्स अपनी टीम के लिए सिक्योर करते हुए नजर आ गए, और स्कोर लाइन आगे बढ़ता हुआ पर्पज स्पोर्ट्स की साइड से। देखते आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? You want to bet something different is going to happen because I know what is going to happen. Lime Juice is going to get eaten alive, and they are not able to even balance and hold their ground. The fact that they have a credit deficit is not letting them buy the guns. They are outmanned, outgunned, outskilled, and they are literally being eaten and chew alive. The first 2 rounds were nothing but opportunity for them to make impact, but now the difference, and here, yet again, the defenders win, and they are on the match point right now. Mac, what do you think? Are the attackers going to do any different right now, or it's going to be yet another round like the past 12 rounds where the defenders are the
Purpose Esports team is doing nothing but shooting practice. देखिए अभी तो गेम का मजाक बना लिया पर्पस ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने, वहां पे नाइफ करने की कोशिश की वहां पे। देखिए अभी इतनी पॉइंट्स की लीड है, एक मेंटल जीत तो हो चुकी है पर्पस ई स्पोर्ट्स की, हालांकि फॉर्मेलिटी बाकी है। और एक बहुत अच्छा पुश कर रहे हैं वो, डिफेंस हो अटैक हो, और हमेशा उनकी तरफ से एक हमें पुश देखने को मिल रहा है, जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा है लाइम जूस की स्ट्रेटेजीज। लाइम जूस को हमेशा नई नई स्ट्रेटेजीज बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। देखिए हर बार रैना की तरफ से एक अटैक और किल बहुत अच्छा स्ट्रेटेजाइज किया है उन्होंने गेम प्ले को अपने, और हर बार वो पुश के साथ अपनी टीम के लिए किल। और इसी के साथ पर्पल स्पोर्ट्स की जीत, वन साइड जीत देखने को मिली हमें यहाँ पे हेवन पे। जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये डिफेंस ओरिएंटेड मैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन साइड होती है, पर एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें पर्पल स्पोर्ट्स की साइड से। चाहे वो हो गए अटैकिंग या चाहे वो हो डिफेंडिंग, बहुत अच्छा गेम प्ले, जिसके कारण ये मैच जाता हुआ डिफेंडर्स के साइड, पर्पस स्पोर्ट्स के साइड। तो गाइस स्टे ट्यून, अभी हम आने वाले टाइम में और एक मैच के साथ आने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।
girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. I like the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.
लेट्स गो। Good evening, ladies and gentlemen, and yet another round of the map Haven. This seems like yesterday deja vu, but in a different format. The same things from yesterday as today. We have the same casters for y'all. That's Mac alongside me. That's Yayapi. Mac, over to you. गाइस स्वागत है आप सभी का एक्स ग्रेविटी चैलेंजर कप इंडिया में। और एक बार हमें देखने को मिल रहा है हेवन का मैप। कल जैसे हमने स्ट्रीक में देखा था बाइंड का मैप, वैसे ही आज हम देख रहे हैं हेवन का मैप। एजेंट सिलेक्शन की बात करते हैं, हमें देखने को मिलते हैं ब्रोकन 5 प्रोडिजी अटैकर्स साइड में और गॉड्स डिफेंडर्स में चार ही प्लेयर है। एक उनका प्लेयर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं आ पाया, जिसके कारण ये मैच अपने को 5v4 देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कि क्या एजेंट सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है दोनों टीम की ओर से। अटैकर्स की ओर से देखने को मिल रहे हैं एक इनिशिएटर, एक सेंटिनल, एक कंट्रोलर और दो ड्यूलिस्ट। वैसे ही डिफेंडर्स की ओर से एक सेंटिनल, एक इनिशिएटर, एक कंट्रोलर और एक ड्यूलिस्ट। What do you 45 think, Mac? काफी This मुश्किल होने deficit वाला of है। देखिए this. जैसे अब बात किया जाए ये मैप की, तो ये मैप बहुत बड़ा है और 3 प्लांटिंग साइट्स, तो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है डिफेंडर्स को डिफेंड करने में, क्योंकि उनके पास एक ही सेंटिनल मौजूद है, वो भी सेज के रूप में, और उनमें एक और सेंटिनल की ज़रूरत होती है अगर ये मैप अच्छे से खेलना है। तो देखते हैं कि क्या होता है। Yes, a big map like this does require an extra sentinel, but not only we see an extra sentinel, but we're seeing an additional power which the attackers have over here. When we see the stock up only, we see all the attackers have picked up that one gun which they know, and everyone's working in uniformity. I don't know why, but I got a feeling that these attackers are going to have a good time with the defenders. Let's see, Broken 5 Prodigy, are you going to make history over here? Are you going to leave a legacy? Are you going to chew people their life? Or is it God, Team God, who's going to come in and show their abilities to y'all? Let's go for it, and we begin with round 1. Back to you, Matt. देखिए हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की। देखिए वन साइड अटैक कर दिया है अटैकर्स की ओर से BN5 ने, और मौका नहीं दे रहे हैं वो कमबैक करने के लिए अभी भी गॉड टीम को। और बहुत अच्छा किल देखने को मिला यहाँ पे हमें जेट की तरफ से, और बहुत इजीली राउंड सिक्योर कर लिया अपनी टीम के लिए। देखिए हम बात कर रहे थे साइट होल्डिंग की। जैसे 4v5 होने वाला है ये मैच, बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है डिफेंडिंग साइड को। एज ए डिफेंडर प्लेइंग एक प्लेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वन मैन डाउन ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है साइड रीटेक करने में। वैसे ही ये 4v5 खेल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ने वाली है डिफेंडर्स को। It looks very intimidating for the defenders, because not only do they have 4 members in their team, they're running short on credits, everyone's coming in a pistol, and it's not going to be that easy. And we can see the brutality of the attackers coming in. Defenders look like the underdog, but why do I feel that they have some little bit of magic or a trick up their sleeves? As we go in with the round, we see the defender, oh my god, lose players really brutally one after the other, and they're down to the last Omen who's with a pistol battling Shova. And this doesn't seem good, because all the 4 ganged up against Omen, and the second round as well goes to the attackers. देखिए हम बात कर रहे थे मैच की 4v5 की। देखिए अब पहले से ही पता है BN5 के मेंबर्स को 4v5 मैच होने वाला है, और सारे बंदे स्प्लिट में खेलने वाले हैं। कोई भी एक साइड पे 2 बंदे स्टैक नहीं हो सकते, इसी के कारण वो उनके तरफ से एक डोमिनेटेड पुश देखने को मिल रहा है दोनों बार। इसी के कारण साइड भी उन्हें मिल जाती है, प्लांट भी हो जाता है, और डोमिनेशन मतलब सीटी लेने के बाद वो किल करने को जाते हैं विदाउट होल्डिंग देयर पोजीशन। ये मैच ऐसे ही चलते रहेगा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फिनिश होने के लिए। This is becoming into a hunt. It is becoming very brutal as we are proceeding. It's a 4v5 situation right now, and we are proceeding to round 3. We need to see, is it the deficit of guns which help
the attackers make a difference because finally the defenders have gotten it and the attackers are planting the spike. It's a 4v2 game situation. Jet immediately going in for the attack during the attacker's side, hence she's dying, and now it's a Jet v3 situation with the defenders having Jet. It's a brutal situation. Jet going in for a 1v1 situation. Will Jet be able to do anything and get Cypher out of the situation, defuse the bomb and get a good victory for the team? Because this looks very interesting. This looks like a lot is happening over here out of nowhere, and the bomb is taking its toll and it's becoming very beautiful. But no, the attackers seem to be a little too cheeky. Cypher having his upper advantage of moving around and getting jacked from behind, and the team is beautiful. The round goes to the attackers. Back to you, Mac. एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें डिफेंडिंग जेट की तरफ से, पर वो ये जैसे हम बात कर रहे हैं इनिशियली कि टीम वन मैन इनिशियल डाउन है, तो उसी के साथ थोड़ा दबाव महसूस कर रहे होंगे जेट एज अ सिंगल ड्यूलिस्ट अपनी टीम को कैरी करते समय, क्योंकि एज अ सिंगल टाइप ड्यूलिस्ट और वैसे भी इतने बड़े मैप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना तो करना पड़ता होगा, और टीम सोली पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे BN5 की तरफ से मर्सिलेसली पुश कर रहे हैं वो हर बार विदाउट किसी डर के, और इसी के साथ साइड एंट्री मिल गई और सोवा ने वहाँ पे डाउन कर दिया जेट को। देखिए हम वही बात कर रहे हैं कि मैन एडवांटेज सिचुएशन में पहले से BN5 और इसी के साथ इतना फियरलेस गेम प्ले, जिसके कारण अभी ये हमें स्कोर लाइन देखने को मिल रही है, हर बार सिंगल मैन स्टैंडिंग देखने को मिल रहा है हमें डिफेंडर की ओर से, और बहुत ही मर्सिलेस पुश जेट की तरफ से, और वहाँ पे एक और किलोमैन के द्वारा मिलता हुआ जेट को, और एक टीम में सारे प्लेयर्स ने एक किल करने को मिला इस राउंड में। उसी के साथ स्कोर लाइन आगे बढ़ता हुआ अटैकर साइड से 4-0। It is becoming too stressful for the defense. I can't even fathom what they must be feeling right now, having a one-man deficit, having a 4-point deficit, having a credit deficit, not having the ability to have a loadout with them. This literally feels like a moment from Koi Mil Gaya. The defenders could use a Jadoo. Jadoo can be the fifth person for them who can make the difference. But let's see who's going to take the mantle of Rohit and get something back for them, because the attackers don't seem to have any mercy whatsoever as they push in. Oh my god, okay, everything is started too quick. The spike is already planted. It's a 3v5 situation and it doesn't look good for the defenders as they're losing one member at a time, a 5v1 situation. And is this going to be a flawless? No, it's not going to be a flawless, but they got 5 games back to back in their pockets, which make it so too easy, so too much of a cakewalk for the attackers. Oh my god, they are leaving a legacy over here. What do you think? Are they going to be this intimidating for the next 8 rounds as well, Mac? देखिए जैसा अटैकर्स डोमिनेट कर रहे हैं मैच में, देखिए ये राउंड में एक सेमी बाय देखने को मिलने वाला है डिफेंडर साइड से, क्योंकि क्रेट्स की कमी जरूर महसूस होने वाली है उन्हें, क्योंकि एक राउंड भी नहीं जीते वो अभी तक, जिसके कारण उनकी क्रेट्स की कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा दूर नहीं है जब और एक इको देखने को मिलेगा, और इसी के साथ ये राउंड स्टार्ट हो चुका है। वही डोमिनेशन, वही एग्रेसिव पुश देखने को मिलता हुआ जेट की ओर से, और समय क्लूलेस दिख रहे हैं यहाँ पे डिफेंडर्स में। And it is too brutal. We are seeing the attackers coming. They are literally hunting the defenders down. That's a first. It's the other way around during a game. Jet from the defender's side, holding a ground, getting a few kills, but one person. How much will one person take the entire team on the shoulder? It's not looking good with a 6-0, and we can see the defenders. Everyone has picked up a machine gun. While from the attacker's side, we got Jet with her operator here. So shit's gonna get captivating. It's gonna get interesting. I don't know what to do, so here's a small freestyle rap for you. So welcome to the game of Valorant, and this is not gonna be something so easy for infants to agree. But yes, do you want to stay with Mac alongside Yayati as we head to round 7 for the? देखिए सेम चीज देखने को मिली इस बार। ओडिन का इस्तेमाल बहुत अच्छा डैमेज देने को मिला, इनिशियल डैमेज वॉल बैंक के तो देखने को मिला, और यहाँ पे अल्ट आता हुआ सीकर्स देखने को मिला हमें एक इनिशिएटर के द्वारा, जो है स्काई पर बहुत अच्छा पोजीशनिंग वहाँ पे सोवा की तरफ से 2 मैन डाउन कर दिए वहाँ पे। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग में हमेशा एक ना एक प्लेयर देखने को मिलता है हमें डिफेंडर साइड से, क्योंकि मैप बहुत बड़ा है और पोजीशनिंग करते आते हुए रिटेक के लिए बहुत ज़्यादा लंबा घूम के आना पड़ता है, और इसी के साथ
और एक फ्लॉलेस राउंड BN5 की ओर बढ़ता हुआ। देखिए अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे कि जब तक राउंड नहीं मिलेगा डिफेंडर्स को उनके क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, और पिछले राउंड में इतना हेवी बाय करने के बाद उनके पास क्रेडिट्स नहीं है। अगेन हमें एसएमजीज बाय आउट देखने को मिलने वाला है डिफेंडर साइड से, और बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है अटैकर साइड से, जिसके कारण हर राउंड में प्रेशर प्रेशर वाली सिचुएशन डिफेंडर्स पे आ रही है, और क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं हमें डिफेंडर्स। हर राउंड में सेम चीज सेम चीज सेम चीज विदाउट एनी चेंज रिपीट होती दिख रही है। Scanning ahead. It is getting monotonous now. The 8th round we are in, and pooh, that was a brutal shot. The defenders are outgunned, but over here it doesn't demoralize them. It's a 3v4 situation, and yes, they might get into a 3v3 situation with the planting happening from the attacker's side. The spike is in location. We see Jet take up her ultimate and going in to hunt for the defenders, and one at a time. They are taking every member of the defenders down. There we see Sage go in and get a 2v2 equalizer for the team. This is one of the most promising games we've seen. We see a 2v1 situation with Jet taking down Omen in a 1v1 situation where it's Jet versus Sage. Will Sage be able to? She did revive the team member, and she got an added advantage over here. Jet running low on her spikes on a machine gun, which is going to make her run slow. So we see over here, we see Sage going in, and this might be the round. This is the round where the defenders finally get a point in their back, get a clutch game, and make that difference. Beautiful. देखिए वहां पे जेट की तरफ से बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें अटैकर साइड से, जिसके कारण वहां पे स्पाइक डिफ्यूज के लिए टाइम नहीं मिला सेज को, और एक राउंड अटैकर साइड से अटैकर की साइड जाता हुआ। जैसे कि हम बात कर रहे थे सेज की तरफ से बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, क्योंकि देखिए एक एसएमजी के साथ रन एंड गन करना बहुत आसान हो जाता है, और एक ये गन मेरे ख्याल से स्पेक्टर ब्रोकन गन है इस गेम की, क्योंकि उसके साथ रन एंड गन जो एक बहुत बड़ी चीज होती है वो एआर के साथ नहीं कर सकते, पर स्पेक्टर के साथ अच्छा रन एंड गन देखने को मिला सेज को, और इसी के साथ 2 किल के साथ एक रिवाइव जरूर किया, पर से जहाँ पे जेट ने टाइम के साथ वहाँ पे उन्हें बिजी रखा, और एक और राउंड अटैकर की साइड जाता हुआ दिखा। देखिए सेम चीज रिपीट हो रही है हर बार, एक बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है अटैकर साइड से। बैक ऑफ वो पुश कर रहे हैं, साइट ले ले रहे हैं, और लास्ट देखो लास्ट टाइम भी सेम चीज रिपीट हुई थी, इस टाइम भी सिंगल मैन स्टैंडिंग जेट, हमेशा सेम चीज रिपीट होती है, और इसी के साथ 8 पॉइंट की लीड के साथ BN5 मैच में लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ करना है तो मुझे लगता है कि जेट की ओर से कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए इनिशियल किल्स देखने को मिलने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है गेम में। पर जैसा अभी तक ये गेम चलता है अटैकर्स का ही बोलबाला नजर आ रहा है। The attackers have taken in the domination over here, and we are seeing the attackers having a 4-1 advantage over the defenders, and they are actually hunting for the defender now that the bomb is spiked. We got 2 attackers comfortably scanning the entire map, and I guess the defender this time just wants to survive and not get killed. This looks so interesting, but the attackers win a 9-0 lead, which is going to shatter the morale of the defenders. कुछ नहीं तो डिफेंडर्स खाता खोलो, 1 पॉइंट डालो, बिकॉज देखिए जैसा अब तक के मैच चलता आ रहा है डिफेंडर्स को किल्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण राउंड बाय राउंड लीड बढ़ती जा रही है अटैकर्स के साइड से, और जल्दी हमें साइड चेंज देखने के पहले मैच खत्म होता हुआ नजर आएगा मेरे ख्याल से। ऐसा हो सकता है एक लास्ट राउंड अगर देखा जाए तो इसके पहला वाला, उसके अलावा डिफेंडर्स के साइड से कोई अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। it is becoming very one-sided. It's not becoming very one-sided, to be honest. It's become one-sided. That one player deficit is definitely affecting our defenders over here. And just imagine if the attackers don't even give a single win to the defenders and get a clean sweep of the entire slate. That's basically going to be online gaming history to come to think about it. सही बात किया आपने, अभी सही बात बोली है, पर की तो दिक्कत ये है कि एक किल के बाद जो ट्रेड ऑफ हो रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज हो पा रही है डिफेंडर्स के लिए। देखिए डिफेंडर्स ट्राई जरूर कर रहे हैं, पर हर बार जैसे जेट ने सबसे पहले किल निकाला, इनिशियल पिक दिया वहाँ पे अपनी टीम को, पर वहाँ पे साइफर का ट्रेड आया, उसी का साथ ट्रेड ऑफ कर दिया था साइफर ने। वैसे ही 5v4 का पहला ही मैच चालू है, उसी के बाद अगर ट्रेड ऑफ ऐसे होते रहे तो डिफेंडर्स को डिसएडवांटेज मिल रहा है हर बार, जिसके कारण अभी तक उनका खाता नहीं खुला है पॉइंट्स में।
अभी देखते हैं ये राउंड में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं स्काई अपनी टीम के लिए, या फिर वो सेव करते हुए नजर आएंगी। It doesn't look that easy because yes, the spike is planted. It's a big map. He has to go all the way from, how do I say, from the B side and come and figure out where the spike is planted on C, and he's going to face Raze. And Raze, I'm saying, apologies for that. He's going to face Jet any moment if he crosses this corridor. And the thing about that is it's not going to look that easy and good for him. It's a severe battle, it's a tough battle, and the chances of the defenders coming in doesn't seem that easy because the ticking of this spike is what's getting to me. Not only is it increasing the pressure for me, but the mental pressure of the defender is beyond belief, and the attackers take the 10th round effortlessly on a one-on-one face. देखिए Oh my god. पहले 5v4 मैच चल रहा है, उसी के साथ जेड भी डिस्कनेक्टेड दिख नजर आ रहे हैं डिफेंडर्स के। सो ये मैच 3v5 होता नजर आ रहा है हमें, और मुश्किलें बढ़ चुकी है डिफेंडर्स के साइड से। बात किया जाए, पहले एक मैन वन मैन डाउन है और ऐसा ही चलता रहा, तो 3 राउंड के बाद हमें ये क्लीन स्वीप देखने को मिल सकता है यहाँ पे हेवन के मैप पे, जो कि एक बेहतरीन मैप है एज अ डिफेंडर की साइड से। बात किया जाए ऑपरेटर का यूज अगर होता है यहाँ पे जेट के द्वारा, तो इनिशियल पिक उन्हें अच्छे से मिल जाते हैं, पर यहाँ पे क्लूलेस नजर आ रहे हैं डिफेंडर्स। Luck is also not in favor of the defenders if you think about it. Imagine they would have been on the attacking side. That one deficit of the Sentinel wouldn't have affected them the amount it is affecting them to start with defending. Maybe if they would have been on the offensive side, it could have made any difference. But currently, everything is in for the Prodigy, and we are in for the 11th round. Is it still going to be a one-sided round? Because not my gut feeling, my calculation and facts in my head. Logic in my head makes it seem yes, and as I say that, it becomes a 3v5 situation. It goes brutal and the shooting starts. Ooh, it's made a 3v3 situation. A 3v2 situation with Omen coming in for a fight, but no, that's not going to happen. We see the drone in the sky figuring out to get some intel, but that's not going to seem that useful because the map is big. This is not going to help you that much. Right around the corner, we can expect Omen from the defense side, attack side to be stuck between a crossfire, but no, he gets safe. And as we enter point B, there might be a little bit of aggression because we see Sova take down the defender, and the defender are they're left to the last player. But in the blink of an eye, the attackers make this look like child's play. Make this look like something I would give my younger brother. Hold your controller, which is turned off, because let me take care of the game. It's become too one-sided. It's done. It's done. Matt, over to you. देखिए यहाँ से तो मुझे कमबैक के कोई आसार नजर नहीं आ रहा है डिफेंडर साइड से। बात करें गॉड की टीम की तरफ से, क्योंकि पहले ही एक बंदे वन मैन शॉट है उनकी टीम, और उसी के साथ जेट का टेक्निकल इश्यू चल रहा है, तो मैच में बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत कर लिए बीएन ब्रोकन फाइव प्रोडिजी ने, और बस 2 पॉइंट दूर है अपनी टीम को जीत दिलाने से। देखते क्या होता है। हर बार एक ही उनकी सिचुएशन देखने को मिल रही है, हर बार स्प्लिट में ना खेलते हुए वो एक साथ खेल रहे हैं, जिसके कारण हर बार मैन एडवांटेज सिचुएशन में वो जीत रहे हैं, ट्रेड ऑफ ले रहे हैं अपनी टीम का, और एक एक करके कम कर रहे हैं गॉड के बंदों को, जिसके कारण हमेशा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये लीड है, ये लीड हमें जो नजर आ रही है, और इसी के साथ बहुत अच्छा क्लच करते हुए नजर आएंगे जेट, और इसी के साथ पहला राउंड डिफेंडर्स की ओर बढ़ता हुआ। बहुत अच्छे 2 किलो यहाँ पे जज के थ्रू लिए थे, सेज ने बी साइड पर बहुत अच्छा होल्ड था वहाँ पे, जिसके कारण वो 1 पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब हो गए डिफेंडर्स। अभी लगता है कि कमबैक के आसार है, पर कमबैक करने के लिए अभी दिल्ली दूर है। It's not that possible. The possibility of a comeback is close to zero now. They cannot do anything to win the game. But the fact that they've opened the book and not let the Prodigy 5 have the Broken 5 Prodigy have their clean sweep win. They got the switch. They got back to the Pistols. They can add in a 2 over here because, yes, the last round, when they were down under without that much of equipment and weaponry, they did go batshit crazy and got themselves a win. They could do the same right now, and if not anything, get a 2 to 3 point
on their board, which yes, indeed will affect their coolness scope in future games and repetition, because now it is brutal. A 4v4 situation over here with the attackers and defenders equal. We see the attackers do have an advantage, but no, the defenders are not going to be that good. 1-for-1. We are losing a player here, we are gaining a player. No, 3v2. The attackers are on an advantage over here of one man, even though starting off the game with a one deficit. It is beautiful to see this game. Sage's health is real. Apologies for that. Jet's health is really low, and she's one shot away from being taken down. We see Omen put in his spike and get that advantage. The spike is planted. Jet is eliminated. It's a 2v1 situation with Phoenix face to face with Omen, and Omen gets the second point for his team. Oh my god. If not a comeback, but good gameplay and showing that yes, we also have skills. Okay, I'm going to say that attackers do have an advantage on this map because of the length. Do you think Broken Fire Prodigy is going to do some tricky, crazy stuff over here and get a clean slate, make a flawless game to show that yes, they indeed are amazing players? Or as we come to the next round, Mac, it's going to be something really unexpected. Mac, over to you. देखिए एक और राउंड डिफेंडर मतलब अटैकर्स की ओर बढ़ता हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा मॉरल पुश मिलता होगा, पर इनिशियल किल्स वहाँ पे जो पुश आया तीनों के तरफ डिफेंडर्स की ओर से, और एक बहुत अच्छा राउंड जाता हुआ डिफेंडर के साइड 4v1 एडवांटेज के साथ एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है BN5 की टीम। एक पिछला राउंड बहुत अच्छा गया था गॉड टीम के लिए, पर मैन एडवांटेज जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैन एडवांटेज सिचुएशन में हमेशा दूसरी टीम को फायदा ज्यादा होता है, और वही दिखाया है हमें ब्रोकन फाइव प्रोडिजी ने। उन्होंने बिल्कुल परवाह न करते हुए डिफेंस में भी वो पुश कर रहे हैं हर साइड हर एंगल से, जिसके कारण दिक्कत हो रही है गॉड्स को पुश करते समय साइट एक्वायर करने के लिए, जिसके कारण ये राउंड भी बहुत अच्छे से एक्वायर कर लिया है प्रोडिजी ने। जस्ट एक लास्ट पॉइंट मैच पॉइंट की जरूरत है उन्हें ये राउंड ये मैच कवर अप करने के लिए। देखते हैं क्या ये राउंड उन्हें मिलता है या नहीं। It is priceless to see the last round. It's like Broken Five got offended and they entered and they were like, no, we want all the kills as quick as the game starts. And yes, they ended the round, but now we're seeing a 3v5 situation. The attackers do not seem to be in that good a space because the Prodigy is coming in over here, and yes, they got their final win. Oh my god, this was too easy. This was cakewalk for them. It was really, really fun to look at these guys, have some fun, and get offended when एक बहुत अच्छा मैच जाता हुआ ब्रोकन फाइव प्रोडिजी के लिए। जैसे हमने देखा ऑल राउंड डोमिनेशन देखा उधर, बहुत अच्छा सिनर्जी बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिला। अगर 5v5 मैच होता तो शायद थोड़ा टफ हो सकता था, थोड़ा और पुश हो सकता था गॉड्स के नज़रिए से देखा जाए तो, पर कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस और बाकी सारी इश्यूज के कारण हर बार मैच नहीं हो पाते अच्छे से, प्लेयर्स नहीं खेल पाते। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू ब्रोकन फाइव प्रोडिजी एंड हार्ड लक फॉर गॉड। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।